Okay, so just like AC generator, the purpose of DC generator is to convert mechanical energy into electrical energy, or electrical energy will be like in DC form, or you can say that current will only flow in one direction, not like AC where current can flow in both direction, reverse and forward. So in DC generator, current will only flow in forward direction, right? So purpose will be same, that this generator will also convert mechanical into electrical, but the type of electric current is different, that this generator will convert electric current into DC, only one direction, right? Or already we discussed about the components of AC generator. If you remember the components of AC generator, so what are the components of AC generator? Slip rings? Slip rings, brushes, armature. So those are the components which are used in AC generator. So same components are going to be used in the DC generator, but there is only a one different thing in DC, and that component is known as magnets, armature, brushes. Okay, in AC generator, you know that we use slip rings over there, right? This is the Yes. component which we use to reverse the direction of electric current, right? In DC generator or in DC motor, we use a component which is known as commutator. तो यहाँ पर हमारे पास एक कम्यूटेटर का कंपोनेंट यूज होगा, और the purpose of that commutator, or you can say that the function of commutator is different from slip rings, because slip rings are in pair and both wires are connected individually with each slip ring in AC generator, right? ओके अभी सो लास्ट टाइम एसी जनरेटर जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर हमने स्लिप रिंग का कंपोनेंट देखा था, राइट? Yes. और यहाँ पे एक डिफरेंट कंपोनेंट बस ये होगा कि अगर आप इस डायग्राम में देखो तो ओरिएंटेशन सेम है। यहाँ पे मैग्नेट्स भी हैं, नॉर्थ साउथ पोल, और आर्मेचर सेम है, और बाकी हम यहाँ पे फिर ब्रशेस कनेक्ट करके उससे हम सर्किट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो सिर्फ एक कंपोनेंट डिफरेंट है, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर और स्लिप रिंग में अगर आप डिफरेंस देखो, तो स्लिप रिंग्स दोनों सेपरेट सेपरेट थे। एक सिंगल वायर जो है वो एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट थी, और सेकंड वायर जो है वो सेकंड स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट थी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप देखो, जो कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर के सेंटर में गैप है दो जगह पर, लेकिन वो पूरा पार्टिकल जो है वो सिंगल पीस में ही है, राइट? तो यहाँ पर अब आप पहले इसकी वर्किंग देखो कि ये कम्यूटेटर हम क्यों कनेक्ट करते हैं। एक तो ये रीजन है कि यहाँ पे डायरेक्ट करंट है तो सिंगल डायरेक्शन ही चाहिए होगी, राइट? अच्छा चलो, हमें सिंगल डायरेक्शन चाहिए, हमने कम्यूटेटर कनेक्ट कर दिया।
लेकिन ये यहाँ पर सेंटर में गैप क्यों है? ठीक है, गैप देने का यहाँ पे रीजन क्या है? कंप्लीट भी तो हम रिंग यूज कर सकते थे, तो गैप क्यों यूज करते हैं? तो ये दो क्वेश्चंस है हमारे पास यहाँ पर। पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग किस तरह से, फिर हम आगे देखते हैं इनके रीजंस के साथ। Will start to flow. As we see, positive terminal of a battery is connected to left conductor of a turn, and negative terminal is connected to right conductor of a turn. As we see in model, north pole of the magnet is placed near left side, and south pole is placed near right side of the turn. Current in left side flows inward, and current in right side flows outward. As we see, conductor is carrying current and they placed in magnetic field. Both of them experienced mechanical force acted on them. Direction of mechanical force can be easily determined by applying Fleming's left-hand rule. अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना रोटेशन का, जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट भी है वहां पर और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो अब यहाँ पे डीसी मोटर जो है वो अब आपके पास जब रोटेशन स्टार्ट करेगी, तो उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आप लेफ्ट हैंड रूल यूज कर सकते हो। ठीक है, और उस लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता है सिंपल, आपको इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का आइडिया हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का आइडिया हो, आप जो है वो फोर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, और अभी Use ये left-hand एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर rule. देख लेते हैं हम। To do this, spread out your left thumb, forefinger, and second finger so they are all at 90 degrees to one another. With that, if the forefinger is aligned along direction of magnetic field, from north pole to the south pole, and second finger is aligned along direction of the current and left side conductor, then thumb indicates direction of mechanical force. Similarly, if the forefinger is aligned along direction of magnetic field, from north pole to the south pole, and second finger is aligned along direction of the current and right side conductor, then thumb indicates direction of mechanical force. Due to this upward and downward forces on the turn, one torque is produced. When turn rotates. अच्छा, अब ये जो रेड एरोज हैं ये आपको इसकी फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहे हैं। अगर एक साइड पर जो फोर्स अपवर्ड है, तो दूसरे साइड पर फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगी। तो दोनों फोर्स ऑपोजिट होने की वजह से आपके पास वो रोटेशन कंटिन्यू रहती है। ठीक है, आपसे कोई इतना डिटेल ये फॉर्मूला और ये सब नहीं पूछेगा, ये सब इंक्लूड नहीं है आपके इसमें फॉर्मूला। सिर्फ आपको वर्किंग पता हो कि कैसे वर्क कर रहा है, कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। और जैसे डायरेक्शन हमें फाइंड करनी थी, तो डायरेक्शन हमें पता है लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड करनी है। और लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस भी देखे थे, तो कोई ऐसा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें बहुत कोई टिपिकल वर्किंग पूछी हो। तो सिर्फ आपने इसमें वर्किंग को नोट करना है कि आपके पास एक एनिमेटेड वर्किंग की यहाँ पे वीडियो है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम यहाँ पर जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं कम्यूटेटर, उसका क्या यूज है। अच्छा, कम्यूटेटर यूज करने का रीजन ये है कि यहाँ पर जो है वो सिंगल साइड रोटेशन है, यहाँ पे डबल साइड जो है वो करंट का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब वो सिंगल साइड करंट फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह अगर हम इस कॉइल को कंप्लीट वर्टिकल कर देना, तो वर्टिकल में क्या होगा कि आपके पास बहुत माइनर सी फील्ड पास हो रही होगी, क्योंकि सेंटर में तो ये पूरी कॉइल ब्लैंक है। तो आपके पास यहाँ से तो कोई फील्ड क्रॉस ही नहीं हो पाती। जो फील्ड क्रॉस होनी है वो इस कंडक्टर से होनी है। तो जब ये बिल्कुल वर्टिकल होता है, तो आपके पास बहुत मिनिमम फील्ड पास होती है और वहां पे इतनी रोटेशन नहीं मिलती। तो उसकी वजह से आपके पास ये कम्यूटेटर में गैप बनाया जाता है कि जब ये रोटेशन कंटिन्यू हो, और जहां पर ऐसा कोई एंगल आ जाए कि जहां पर फोर्स अप्लाई ना हो रही हो आपके पास इस पर कॉइल पर, या फोर्स ऐसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है जो रोटेशन को सपोर्ट नहीं कर रही,
तो फिर ये जो गैप बनाया होता है, गैप से क्या होता है, वहां पे करंट की वैल्यू ब्रेक हो जाती है। तो फिर आपके पास कोई करंट नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होती, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वो इनर्शिया की वजह से ऑटोमेटिक कॉइल रोटेट होके अपने एंगल पर वापस आ जाती है, और ये प्रोसेस फिर कंटिन्यू रहता है। ठीक है। Sir, can you repeat after the current breaks? ओके। अच्छा, नॉर्मली अभी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे, तो अभी इस पे फोर्स अप्लाई हो रही है अप एंड डाउन। ठीक है। अगर इस कॉइल की ओरिएंटेशन लेट्स सपोज वर्टिकल हो, कंप्लीट कंप्लीट वर्टिकल अगर इसकी पोजीशन हो, तो उस कंडीशन में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज होगी, राइट। फोर्स विल बी आउट ऑफ द पेज और इनटू द पेज। एंड जो सेटअप यहाँ पर हमारे पास गिवन है, उस सेटअप के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि बॉडी विल और द कॉइल विल नॉट मूव इन इनटू द पेज डायरेक्शन और आउट ऑफ द पेज डायरेक्शन, राइट। Yes. So that's why there will be some stop in the electric motor, or you can say that coil will stop moving into the magnetic field, because now force are into the page or out of the page direction. So to continue the process or to continue the flow of electric motor, so there will be a gap in commutator. क्योंकि जब आप गैप वहां पर यूज कर रहे हो, तो उस गैप का आपको एडवांटेज ये है कि जब कोई ऐसी पोजीशन होगी वर्टिकल जहां पर फोर्स इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज अप्लाई हो रही है, तो वो गैप आपके पास क्या होगा कि वो करंट को ब्रेक कर देगा। जहां पे आपके पास गैप होगा कम्यूटेटर में, वहां पर आपके पास करंट की कोई वैल्यू फ्लो नहीं होगी। ठीक है। और कोई वैल्यू जब आपके पास करंट की फ्लो नहीं होगी, तो वहां पर कोई फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी, राइट। तो ये जो Yes. इनटू द पेज और आउट ऑफ द पेज फोर्स है, ये भी आपके पास वहां पर नहीं होगी, क्योंकि अगर ये अप्लाई होती रही तो आपके पास मोटर हाफ रोटेशन करके स्टक हो जाएगी, क्योंकि आपके पास डायरेक्शन चेंज हो रही है। और सेकेंडली, फिर जब आपके पास कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तो ड्यू टू इनर्शिया कॉइल विल कंटिन्यू इट्स मोशन। जिस तरह सिंपल पेंडुलम होता है, पेंडुलम को अगर आप एक साइड पर लेकर जाओ और उसे रिलीज करो, तो वो इनर्शिया की वजह से अपनी बाकी मोशन कंटिन्यू करता रहता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सो इसी तरह से अगर हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाती है मोटर की, और फिर वहां पे करंट जीरो हो जाता है, फोर्स जीरो हो जाती है, तो बाकी हाफ रोटेशन वो इनर्शिया की उसकी हेल्प से कंप्लीट कर लेगा, राइट। Yes. तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास गैप यूज करने का कम्यूटेटर में। वरना हम कंप्लीट सर्कल रिंग भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने वहां पर गैप यूज किया, ताकि आपके पास कुछ एंगल ऐसे होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में, कभी कभार ऐसा होता भी है कि इलेक्ट्रिक मोटर को हम स्टार्ट करते हैं तो वो स्टक हो जाती है, फिर उसका फैन थोड़ा सा मूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिक फिर स्टार्ट हो जाती है, तो वो इस पोजीशन में स्टक हो जाती है कि जहां पर फोर्स उस पे इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज अप्लाई हो रही होती है, जहां पर वो मूव नहीं कर सकती। इसकी एग्जांपल सेम आपके पास साइकिल और बाइक के व्हील की तरह है, कार के व्हील की तरह, कि जब आप उसमें एक्सल के साथ फिक्स करते हो टायर को, तो वो आपके पास सिर्फ रोटेट कर सकता है एक पोजीशन में। आप उसे इनसाइड आउटसाइड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पूरे नट बोल्ट को लूज करना पड़ेगा, फिर वो इनसाइड आउटसाइड मूव कर सकता है। अदरवाइज वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, राइट। सो ये भी सिर्फ रोटेट कर सकता है, ये भी बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी फिक्स है। ठीक है। Yes. Rotates on clockwise direction as shown. After rotation of the turn comes to vertical position in respect of the magnetic field. At this position there is अच्छा, अब ये जो फील्ड आपको पोजीशन बता रहे हैं ना, ये वो सेम पोजीशन है 90 वाली जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और अभी आप देखो जो कम्यूटेटर के गैप्स हैं,
वो कांटेक्ट में ब्रशेस के साथ। ठीक है, तो ये पोजीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि वो गैप क्यों बनाते हैं, तो आपको वो उसकी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर मिल जाएगी। No current in conductor because conductor and brushes rest between two commutators. Hence, there is no force acting on conductor, by due to moment of inertia, turn continue to rotates and comes horizontal again. Position of conductor has been changed here. That means conductor which was previously in left position comes to right position, and which was previously in right position comes to left position. At that position, we can determine mechanical force, with applying Fleming's left-hand rule. Let's do that. To do this, spread out your left thumb, forefinger, and second finger, so they are all at 90 degrees to one to another. So if forefinger is a line in direction of magnetic field, that is, from North Pole to South Pole, force. This that is, from do this model we can see mechanical force. अच्छा, तो अब यहाँ पर आपके पास एक चीज क्लियर होगी कि जब हॉरिजॉन्टल होगी प्लेट आपके पास तो रोटेशन मैक्सिमम होगा, और वर्टिकल होने पे प्रॉब्लम ये होगा कि वर्टिकल में फोर्स आपके पास अप्लाई जो है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड होगी। तो इस वजह से वहां पर हम कम्यूटेटर में गैप यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आपके पास जो रोटेशन है वो स्मूथ होती है और एक सिंगल डायरेक्शन में आपके पास वो मूव करती रहती है। ठीक है, Yes. तो ये डिफरेंस होता है कम्यूटेटर और स्लिप रिंग में। स्लिप रिंग यूज करते हैं हम दो सेपरेट, ताकि आपको वो वहां पर ऑल्टरनेट करंट मिल जाए, और यहाँ पर हम यूज करते हैं कम्यूटेटर ताकि हम डीसी को फ्लो कर सकें। और डीसी में भी आपके पास जो फ्लो होता है वो इस तरह से होगा कि विदाउट एनी गैप और विदाउट एनी आपके पास इंटरप्शन आप उसे इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, Yes. और इफ वी टॉक अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द डीसी मोटर, तो इफ वी टॉक अबाउट द फैक्टर, or you already know that if you need to find out the direction of force, so you can find out with the help of Fleming's left hand rule, right? Because that was the only rule to identify the direction of force. And if we talk about the factors, so the first factor is of speed. So speed can be increased with the help of value. The factor can also be increased, and second, strong due to strong magnetic field, speed of the motor will also increase. Sir, your voice is cut. Okay, now it is clear. Yes. Okay, so we are talking about the factors. So the factors which includes, the first factor is of speed. If you want to increase the speed of the DC motor, so you can increase with the help of increasing the value of electric current and using a strong magnet, right?
The same factor we already discussed in the induced EMF. So these are two again same factors which helps you to increase the speed of the motor. And second factor is direction of rotation. So the second factor is related with the direction of rotation. So direction of rotation means if you reverse the direction of electric current, so the rotation will also be reversed, right? Because there is now direct current. So if you flow current from right hand side, so rotation will be different. And if you reverse the direction of electric current, if electric current flows from left hand side, so the rotation will also be reversed, right? So direction of rotation, direction of rotation, electric current. Okay, any confusion? No. Some other factors are also included. Force is also included. That if you want to increase the amount of force, so that can also be increased with the help of. So if we talk about the third factor, so third factor is that is applied on the coil or the armature. So the force can be increased by, it can be increased by increasing the current, increasing the current to increase the force according to Fleming's left hand rule. And the second factor, what will be the second factor to increase the force? The commutator? Commutator, actually the commutator is only the component where the force is going to be applied. So if you want to increase the rotation or if you want to increase the force on commutator or the coil, so we need to make the magnet strong, because if you want to increase the speed, so speed can also increase with increasing the force on the coil. So same factors which we discussed in the factor of speed, so same factors are going to be included in the factor of force, because force and speed both are linked with each other. If you increase the force, so speed will also increase. So the second factor is by increasing the magnetic field. So if there will be a strong magnet, so there will also be a strong magnetic field and force will be greater. And third factor is number of turns in the coil. So these are the factors which going to be affect the values or the factors of DC motor, right? Any Yes. confusion? It's clear. Okay. And you also got the concept of commutator, that why we use
a commutator in such a shape that there will be a gap after short interval in commutator because of direction, or you can say that because of the direction of force when the angle between them is 90. So there, that's why we use a gap between commutators. So due to the value of inertia, the armature will continue its motion with the help of inertia, and there will be a smooth rotation or motion of the ring in DC motor, right? Otherwise it will got stuck after every half circle in electric motor, right? Yes. And it's not necessary that there will be only two gap in commutator. If there is a heavy electric motor, so there are multiple gap between commutator, because motor can be stuck at any position because the radius is greater in heavy motors, and the coil and the number of turns, the magnetic field, the electric current, all values are different. So that's why we need to use large gap in commutator. If you just search the word commutator on Google, so you got the real picture of commutators, that how actually commutate in real life. So if you take the, yes, you can see that there are multiple gap between commutator, right? And these are commutator of different electric motors. Okay, Yes. so commutators are like this. You can see that there is very minor gap between them, right? But in demonstrating the diagram or in picture diagram, we used to make them large because we need to know about the idea. Like this, you can see that there is a large gap between this commutator, right? So these are real pictures of commutator that are going to be used in DC motor, right? Yes. Okay, so this is the topic of DC motor, right?